Mir Khalil Rahman went to prison for his pro-Pakistan leanings. Mir Khalil Rahman was arrested. बहुत सारे हुक्मरानों को सच अच्छा नहीं लगता. हमारे न्यूज़ प्रिंट उठा लिया गया था और हम मुश्किल से 2 सफ़े में अखबार छापने में मजबूर हो गए थे. अखबारों को अपने आप को मार्केट करना नहीं आता. ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, लॉयल्टी. अगर इन 3 चीज़ों का इम्तिजाज है तो यू विल बी सक्सेसफुल. जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर एक मेरे ख्याल में आइडियाज़ का फुकदान आ चुका है. देयर इज़ लैक ऑफ आइडियाज़ इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बहुत स्लिक हो गई है. कमर्शियल्स आपकी बनती हैं, एड्स आपके बनते हैं, वो बहुत स्लिक हैं और वो बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आते हैं. लेकिन उनके अंदर जिसको कहना चाहिए ना, जो एक बिग आइडिया होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, वो ख़त्म हो गया है. When Polo was launched back in the 90s or maybe it was early 2000s, तो उस वक़्त हमने एक्चुअली इश्तिहार छापा अखबार में. उनका था मिंट विद द होल, इफ़ यू रिमेंबर. तो हमने एक्चुअली वो एक्चुअल होल के साथ फ्रंट पेज पे अखबार में छापा. इसी तरीके से जब लक्स ने फॉर इंस्टेंस अपनी वो चंबेली का शायद वेरिएंट लॉन्च किया, तो हमने कहा कि जी फ्रेगरेंस दीजिए, लेट पीपल एक्चुअली एक्सपीरियंस व्हाट इट्स ऑल अबाउट. और वो साई के अंदर हमने वो फ्रेगरेंस मिक्स किया and it was actually a fragrant newspaper. You could actually smell the fragrance of Chambeli and feel and experience. This was 10-12 years ago, I guess. So इस किस्म की चीज़ें की गई. 20-25 years ago what had happened was that the industry had actually went into a specialization mode, if that's the right term to use. और कहा गया कि जी हर किस्म की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आएंगी. मीडिया और क्रिएटिव फंक्शंस को अलहदा कर दिया गया और जो एक फुल सर्विस एजेंसी मॉडल था वो ख़त्म हो गया. एंड वी हैड स्टार्टेड हैविंग स्पेशलाइज्ड मीडिया एजेंसीज और क्रिएटिव एजेंसीज अपनी चलती रहीं. और कहा गया कि जी वो जो हैं वो कस्टोडियंस ऑफ द ब्रांड हैं और जो मीडिया इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मीडिया एजेंसीज हैंडल करेंगी. आई रिमेंबर सर मार्टिन सॉरेल पाकिस्तान आए 2019 में फॉर एड एशिया. एंड मार्टिन सॉरेल को रिचर्ड क्वेस्ट के साथ उनका जो था इन कन्वर्सेशन विद मार्टिन सॉरेल था. तो वो रिचर्ड क्वेस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि फ्यूचर का क्या हो रहा है. उसने कहा कि दिस मॉडल हैज़ कम फुल circle now and we are heading back to the full service agency model. तो उससे पूछा सवाल रिचर्ड क्वेस्ट ने कि भाई ये तो तुम्हारी की हुई चीज़ थी. So he said it was right at that time and this is right at this time. So I think I would agree with what he had said in 2019, although 3-4 साल ऊपर गुजर गए, कि I think we're going back to this full service agency model. I think the industry also need to sit down and create, maybe work towards creating hope. वो एक बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क में होप क्रिएट करने की, क्योंकि जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, डिसइल्यूजनमेंट है चीज़ों के साथ, उसको चैनलाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है इनटू होप. अभी एक आई थिंक एक रिपोर्ट आई है, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली मैकेंजीज़, मुझे याद नहीं किसकी है, लेकिन आई थिंक इट्स प्रॉब्ली मैकेंजीज़, जिसमें है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस मीडियम का हो रहा है. द नंबर 1 on that list is newspapers. Number 2 is news channels. Number 3 is the websites of news channels and newspapers, and then radio news, and then 6th 7th number पे social media आता है. So the impact जो है वो जो न्यूज़पेपर्स क्रिएट करते हैं वो कुछ और कोई और मीडियम शायद नहीं करता. वो रहेगा और मेरे ख्याल में आगे भी वही रहेगा. The only thing that we need to understand is कि we are not going to, अगर हम ये समझें कि 100% जो एडवर्टाइजिंग हमारे पास आती थी वो आती रह गई, या जो हम आई बॉल्स हमारे पास थे वही हम आई बॉल्स आज भी लेंगे, तो वो नहीं है.
हमारे आई बॉल्स भी श्रिंक हुए, और बिकॉज ऑफ आई बॉल्स क्योंकि हमारे श्रिंक हुए तो इसीलिए जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ रहा था वो भी श्रिंक हुआ है. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद. ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर की जो लीडरशिप है या जो उसकी इफादियत है वो शायद उतनी नहीं रही जितनी 10 साल 15 साल पहले थी, लेकिन इम्पैक्ट उसका उतना ही गालिबन है. अ स्टोरी दैट कम्स इन लेट्स से जंग ऑफ डॉन हैज़ far more reaching impact than a story on a television news channel or on a digital platform would. मीडिया का जो कंज्यूमर है उसका जो एक लाइफ साइकिल है वो 24 आवर्स है. इन दैट 24 आवर्स की जो बैंडविड्थ उसके पास अवेलेबल है उसके ऊपर उसने कुछ हर चीज़ कंज्यूम करनी है. उस टाइम व्हेन ही वाज कंज्यूमिंग जस्ट प्रिंट, देन रेडियो केम इन, टुक अ बिट ऑफ दैट बैंडविड्थ, देन टेलीविजन केम इन, थोड़ा सा और चला गया, फिर अपना न्यूज़ चैनल्स आए, उन्होंने अपना ले लिया, 24 आवर्स न्यूज़ चैनल्स आए, उन्होंने अपना शेयर ले लिया, डिजिटल आया उसने ले लिया. सो अगर मैं उसमें रहूँ कि आई विल स्टिल ओन दैट 100% बैंडविड्थ, दैट्स अनरियलिस्टिक एंड दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका एक डिस्कनेक्ट है विद द यंगर जनरेशन. वी आर नॉट creating content for the younger generation, we are creating content for our own age groups. So I think that again is something that needs to be looked at. We need to understand their music, we need to understand their poetry, we need to understand their values and their ethos. And if we are able to do that, we can connect with them. The only problem is कि जो content हम create करें वो content relevant हो younger लोगों के लिए जिन्होंने आगे decisions लेने हैं and who are actually the future. For media, marketing is twofold. One, we need to market ourselves to our readers, our viewers, our listeners. And two, we need to market ourselves to our advertisers. Because we have two different target markets. One target market is, of course, the audience that we are catering to, the reader, the viewer, the listener. The other target market is the advertiser, because both of them are equally important. मेरे ख्याल में बहुत सारे मीडिया ने इसको बहुत इग्नोर किया. टेलीविजन ने टू एन एक्सटेंट इसको उठाया है और इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिंट मीडिया ने जनरली इसको इग्नोर किया है और कम किया. आई थिंक अखबारों को अपने आप को मार्केट करना नहीं आता. शायद अपने रीडर्स को भी के पास भी हमें अपने आप को मार्केट करना नहीं आता, और अपने एडवर्टाइजर्स के पास तो डेफिनेटली मार्केट करना नहीं आता. सो मेरे ख्याल में ज़रूरत है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर कि हम कुछ इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनाएं जहां वी आर मार्केटिंग द न्यूज़पेपर्स एज अ प्लेटफॉर्म टू आवर रीडर्स एज वेल एज टू आवर एडवर्टाइजर्स. जो रीडर है वो जो कुछ पढ़ना चाहता है उसको अखबार शायद वो नहीं देते जो पढ़ना चाहता है. रीडर को मेरे ख्याल में पॉलिटिकल शायद कम चाहिए. रीडर को पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स चाहिए. जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके पास इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं. हाउ इफ़ द डॉलर प्राइस हैज़ गॉन अप बाय लेट्स से ₹2 today, how would that impact them? That is what they want to read. I think the reader today wants to read more about climate change. I think people also want to know more about entertainment news. There's a hunger for entertainment news. लोगों ने अपने YouTube चैनल्स बना लिए हैं जिनका जो बेसिकली ये काम करें. दिस इज समथिंग जो अखबार को करना चाहिए, मे बी टेलीविजन चैनल्स को करना चाहिए. स्पोर्ट्स अगेन इज अनदर एरिया where it has changed. 10-15 years ago, there was hunger for sports news, but it wasn't that great. It was restricted to maybe cricket primarily, and then hockey or little bit other sports. But today, for instance, football is very big. Basketball is big. They want to know about what is happening in basketball, what is happening in football. Reading preferences over the years have changed. आज younger लोगों को हमें attract करना है. We need to understand what actually what gives them a kick.
We don't know what gives them a kick. We need to understand that. बहुत कंपटीशन है, बहुत सख्त कंपटीशन है और चैलेंजेस बेतहाशा हैं. न सिर्फ एडवर्टाइजिंग ग्रुप के लिए चैलेंजेस हैं, आई बॉल्स के लिए चैलेंजेस हैं. There was a monopoly of primarily 2 newspapers, one English and one Urdu, the Urdu being Jang. So we worked in that monopolistic environment. That was broken, let's say 10 years ago, 15 years ago, when other players started coming in. For television also, that is changing. Today television, yes, television is competing for eyeballs and for advertising dollars, लेकिन वो किस किस चीज़ों के साथ compete कर रहे हैं. वो अखबार और टेलीविज़न एक दूसरे के साथ अखबार और अखबार एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. टेलीविज़न और टेलीविज़न एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं. अखबार और न्यूज़ चैनल्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. न्यूज़ चैनल्स और entertainment channels एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. Entertainment and entertainment कर रहे हैं. So no, it is a very challenging and it's a very complicated landscape. It's not easy, but we need to understand that we are not operating in, let's say, operating in a print ecosystem or a news channel ecosystem or an entertainment ecosystem. We are actually operating in an overall media ecosystem, and each of us needs to take a part of that ecosystem to make ourselves viable. At least I can say that in the case of our organization, it's the editorial team and the newspapers as well as on the television side that decides what content should be used and where it should be used. Classified business for Jang has been very, very important. Not only in terms of the advertising revenue that it brings in, but more in terms of the readership that it creates. So what we did was that we brought in QR codes in classified, and we gave an opportunity to our readers or the classified advertisers that they can actually shoot a video of their apartment that they're trying to sell or rent, or a house that they're trying to sell or rent, and put that on give it to us, and we'll turn that into a QR code and place it in their ad without any price tag attached to it. Or similarly, if someone wants to sell a car, so we can do the same thing. They can do a video of their car and send it to us. We'll turn it into a QR code and place it in their ad. It will it will communicate to the reader or the buyer in what condition the car is, or in what condition the house or the apartment is, and it becomes easier for him to take a right decision. We won many international awards on it. Then the other initiatives that I am very proud of is when we augmentized our news and our advertising as well as news. You have headlines in the newspaper. We augmentized the headlines and connected the headlines with the same news on Geo News. So if you scan a headline, it will take you directly to the same news on Geo News, and you can watch it also. Third one is virtual reality. Again, I think for the first time कि किसी ने भी न्यूज़पेपर्स में वर्चुअल रियलिटी को यूज़ किया. हमने 2017 में पहली दफ़ा किया, फिर हमने पिछले साल किया. 2017 में हमने 70 years of पाकिस्तान के ऊपर किया था. And we created पाकिस्तान की कहानी जंग की ज़बानी. So we had the front pages of Jang from 1947, October 1947 till 13th August 2017, and in this case 13th August 2022. Main front pages हमने वहाँ बना दिए थे, rooms बना दिए थे कि this room is for the 40s, this is for the 50s, for the 60s and for the 2010 2020s, जिसके अंदर आप जाएं तो आपके पास मेजर जो उस दिन की उस टिकेट की न्यूज़ थी, वो न्यूज़ आपके पास थी.
और उसके अंदर उसका जो फ्रंट पेज अखबार का था वो था. And it was not only just the akhbar ka front page that you could see framed in a gallery, but it was also, for instance, 1948 में जब कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया. So what we did was, we had कायद-ए-आज़म, of course कायद-ए-आज़म की जो तकरीर जो थी वो हेडलाइन में थी जंग की उस दिन, लेकिन हमने उसके अंदर जो कायद-ए-आज़म की एक्चुअल स्पीच थी वो उसके अंदर एम्बेड कर दी. So if you go and click that page, you could click that headline and you could actually listen to Qaid-e-Azam's voice and his speech that day. These are the initiatives, innovations that we have undertaken, and we are really proud of these innovations. And इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद हमने कुछ और नहीं करना, क्योंकि लोग समझते हैं कि अखबार में इनोवेशन नहीं हो सकती. अखबार में हो सकती है. फॉर इंस्टेंस जो ये फ्रेगनेंट न्यूज़पेपर था, that was also an innovation. No one had actually thought of actually having a fragrant newspaper. तो इस किस्म की और बहुत innovations हमने की हैं, but these are just a few innovations that I talked about. If you look at the Jang Group, it is not only the newspapers, it is also television, and it is also digital and other media. I have sales and marketing teams in the newspapers, and I have sales and marketing teams in our news channel. वो दोनों teams जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं. They are headed by their respective chief marketing officers and sales directors who are there. तो वो साथ काम करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि synergies create कर सकें और दोनों टीम्स साथ मिलकर काम कर सकें. जंग एक्चुअली स्टार्टेड आउट इन 1939 फ्रॉम दिल्ली. पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ था, दिल्ली से शुरू हुआ था, और 1939 में शुरू हुआ था, व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. एक वो एमा डंकन की किताब है, ब्रेकिंग द कर्फ्यू, उसके अंदर वो कहती है, ऑन अ लाइटर साइड, वो कहती है कि व्हाट विल यू कॉल अ नेशन हुज लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इज कॉल्ड वॉर. सून इट बिकेम from a weekly, it became a daily paper, and it moved to Pakistan in 1947 and started in Pakistan from Karachi in 1947 as an eveninger and then a daily morninger. So maybe people this is one thing probably people don't know, is that 1939 से हमने 1947 तक we were actually part of the Pakistan struggle. Again, this is something that people may not know. Mir Khalil Rahman went to prison. The founder of the group went to prison for his pro-Pakistan leanings, and he was put in a prison cell in Delhi. And interestingly, likewise, his son was arrested, Mir Khalil Rahman, and he went to jail for his belief in certain ideas. For his jang for freedom of expression, for his jang for freedom of thought, for his jang for freedom of press. So that's something people don't know. People think कि जी पता नहीं शायद कोई लैंड का केस था. लैंड का केस पर कुछ नहीं था. It was his belief for to uphold freedom of press, freedom of expression, and freedom of thought. So from the father to the son. Then people probably don't know is that हर गवर्नमेंट के दौरान हमने we've suffered a lot. बहुत आसान है कहना we've suffered a lot, but actually we've suffered losses in billions of rupees. Whether it was Ayub Khan's government, or whether it was in the times of Mr. Bhutto, or then Ziaul Haq, or later in the days of Nawaz Sharif or Benazir Bhutto, Pervez Musharraf, and then Imran Khan, and so all these governments or the times we suffered because we believed strongly believed in the right of public to know. We wanted to give them what the truth was. So obviously बहुत सारे हुक्मरानों को सच अच्छा नहीं लगता, तो वो चुपता था. तो as a result we suffered a lot. हमारा एक ज़माने में अखबार जो था वो 2 सफ़े तक रिड्यूस हो गया था.
वो हमारे न्यूज़ प्रिंट उठा लिया गया था और हम मुश्किल से 2 सफ़े में अखबार छापने में मजबूर हो गए थे. There was a time when our channel was closed for almost a full year. Our leading hosts were not allowed to come on television. They were taken off here, and they were not even allowed to write columns in the newspaper. So we've suffered over the years. So people probably think कि जी ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बट इस बहुत बड़े ग्रुप ने जितना सफ़र किया है शायद ही किसी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुल्क में किया हो. Yes, I do love art. It's my passion. It's my love, and I do collect art. My father was a collector, and most of the paintings that I have I inherited from him, as I inherited his passion for art. And I've collected some on my own. I've got most of Pakistani masters. I don't like the modern art that we have today, but I collect masters, and most of the collection that I have is Pakistani masters. I've got Sadikans, I've got Guljis, I've got Chuktais, Shakir Ali's, Ahmed Parvez, BMs, and Zahul Akhlaq and all. Yeah. So that's what I like, and that's what I collect. गालिब खत है मेरे पास एक अपना लिखा हुआ. सादिकन साहब की आखिरी जो स्केचेस थे वो मेरे पास हैं. वो ऑफिस में लगे हुए हैं. यू कैन सी देम. इसी तरीके से सादिकन साहब ने मेरी पोर्ट्रेट बनाई हुई है. सादिकन साहब ने मेरी वालिदा की पोर्ट्रेट बनाई हुई है. मेरे भाइयों की पोर्ट्रेट्स बनाई हुई हैं. हिज फर्स्ट कैलीग्राफी इज विद मी. सो या I am interested in art. I collect art, and I love collecting art. My father always used to say कि बेटा 3 चीज़ें हैं. If you build your life around these 3 things, you'll be very successful. One is honesty. Then number 2 is hard work, and number 3 is duality. If you have these 3 elements, you're going places. Honesty and integrity, financial honesty and integrity, moral honesty and integrity, hard work. As they say, there is no shortcut to success. You have to work really hard to go somewhere. वो कहते हैं ना कि there is no elevator to success. You have to climb stairs to be successful. Third is loyalty. Loyalty to your work ethics. Loyalty to the organization that you're working for. So this is the advice that I got from my father, and this is the advice that I've always given to people who come to me and ask me कि जी क्या आप मशवरा दे सकते हैं. तो ऐसे कि एक ही मशवरा है, honesty, hard work, loyalty. If you are going to practice these 3 aspects, build in these 3 aspects into your life, you'll be successful. There's nothing that will stop you from being successful. If you take even one aspect out of it, you're not going anywhere near success. You will reach somewhere, but you will not be successful. Or successful, I think that's another debate also. आजकल के दौर में what is success? It is actually measured more in terms of the riches that you accumulate rather than in terms of your what you've actually achieved in life. तो वो भी देखने की बात है. But yes, these are the 3 aspects that I will always give advice that I will always give to people.